Recording started. So, yeah, hello everyone. So, welcome to the session, and I hope most of the people are joined first time today, and few people are the old one or they already attended the sessions. So, we are in the group, right? iOS Labs group. So, let me quickly brief about it. So, we actually because we are having the first interaction, most of the people. So myself, Kushal, and currently, I'm working in here in UAE in Abu Dhabi from last 2 years for one of the leading banks in UAE, and I have total experience around 9 years. And I started this community. So the intention is behind to let's learn and let's build something amazing together. And basically, I found there are some random groups on over the WhatsApp or Slack communities, but they are not that active, and they are actually some random stuff is going on most of the groups and communities. So that's how I come up with this idea. Ki let's our community make sure it should be active, clean, smoother experience, and impactful things and some amazing things. So let me quickly. Today we had a meeting with volunteers. I'm just giving you a quick updates. So maybe it would be uh, you know exciting for everyone. So the thing is, I already mentioned this point before in our group. I think if we are coming up with the job referral stuff as well, like job referral and how you can showcase your profile, or you can asking for a referral, or someone wants to share the job posting. So there is a way. So basically, in the longer run, we are planning a job portal. Basically, not job portal, but you can say there is something which comes under IS Labs itself, which basically where we actually track all the job postings and people who are actually looking for jobs and how they are good at it right now. Actually, right, basically the portal main you can say problem statement which we are trying to solve. Are you really deserving this kind of referral? If you're really deserving candidate, if you really are good at it, your skill, because in that portal there is a services or there's an options to go through the test, to go through the mock interview, and also you will showcase your LinkedIn, your GitHub profiles, and all that weightage will be there. So based on that, we will give some rating in points, and accordingly your profiles will get like ranking in order, and then companies will come or companies employees will come. Basically, suppose take an example, if some opening is going on Google, so one Google person will come and he or she will see like profiles, and then eventually out of top 5 10 profiles they can reach out to you, and then you will get a call or you will get a referral basically. Because right now what happens, so I found either here, even I know here also like few people are from great product based companies. So if you even if like if we basically post in on the group, some is there, right? So you basically get mostly like 100, say like a 500,000 applications over LinkedIn, over messages and DMs and mails, right? Is that making sense? But out of that 1,000 applications, how you will find one or two or three people? Because right, obviously we normally refer only one or two or three companies, right? One or two or three profiles, right? So how you will sort it out and figure it out, and again it takes a lot of time to go through one-on-one resume, and again resume doesn't say कि, okay, you're really prepared and you're really deserving the candidate. That again it's a different story. So we are actually working on it. We including these factors which actually can say कि, okay, somewhat you come to know that this candidate is actually deserving and actually actively preparing and looking for a job. So yeah. So soon we'll working on this and it will come to the picture. I will let you know the details and we'll keep you posted in the group. But yeah, in the meantime, we are planning to launch two WhatsApp groups. Basically, we today decided this. We discussed this thing in our volunteers group. So people are from volunteer groups. They already know. You can thumbs up or raise hand. So to make things cleaner, so again, there are some groups on WhatsApp. Again, you posted randomly the job openings or you're asking for a referral. So there is a clutter because right now you see in our group around 900 people, right? If I open it directly for 900 and randomly you share your things, so it's not good for everyone, right? Things will get clutter. So someone wants to find some profile, again he or she will get trouble to find the profile, the candidate's profile,
and someone wants to asking for referral, also it's difficult to get the referral or provide the referral, like in both the ways. Or if you someone sharing job postings, and again it's a very clutter, and you again searching it out, and so it's not good over the WhatsApp if you're making these kind of things. So we are planning again with our helping with the help of volunteers. We'll create two groups. One is for only for showcasing your job profile. Sorry, showcasing your profiles. So what that means, you will showcase in a brief format. We have proper template. I will provide mostly by tomorrow. So in that format, you can share your profiles, and even we have some frequency counts. In that manner, you can share your profiles there, and someone, me or one of the volunteers, will review, and then they will share. Basically, we need to make sure the things and data should be clean, and eventually that data we will analyze it, and we'll make it sure to again show in some way or other way over the portal. We are actually launching soon our website also. So even in summary or in, because in WhatsApp message always so many messages, someone wants to check the older history or want to see in a cleaner experience, so on the portal they can check. And our group also will be maintaining the frequency count and the cleaning of the things. So one group for showcasing or asking for a job referral, and you can showcase your profile where you can mention your top skills, your ratings, recently interview happened, so what, like brief about yourself basically. In some other factors context, so I will like give you the template, then you will let you know. And apart from that, one group is for only for the job openings. So suppose again example, if you find some job opening any of the portal or in your company, you can simply paste it there, but again in proper format with some proper factors and attributes, so it is easy to read and quickly you understand, or any candidate understand, okay, this is really for me or not, or if I'm relating, like it's relevant for me or not in my context. So these two things we are planning. So I hope this will help everyone to get the referral and to get some amazing candidates and or referrals. So I hope this making sense. So again, I don't want to make this. We basically we are trying to don't want to make this a random, again a random WhatsApp group. So yeah, so it should be an impactful community, and I hope you are enjoying that. Compile your skills. Please thumbs up once. Then it's starting the session. Compile. We already started with very basic topic. One is like we started with what struct versus class. I hope still people are struggle with that, and still companies ask this topic. You also know, right? Even in our senior software engineer profiles, senior as engineer, or even junior or fresher, whatever your experience is, these topics are still important, and these are the again basic core fundamental of iOS and Swift, right? So we are starting with those basic topic first. We come to the complex or advanced topics also in that group, but we are starting with the basic first because basics are important and are crucial. So yeah. So we started with struct versus class. We eventually provide you the compiled doc. It's almost ready. Mostly you will get by tomorrow. So that struct versus class doc. Then another topic we are taking clauses, and today we taken this properties for topic, which is computed versus lazy versus stored properties. So yeah, so I hope actively you can participate. Most of the people, matlab, obviously not everyone joined that group, but if you really want to learn these topics or want to discuss, that's an open discussion group. There you can share question, answer, and all that thing. But daily basis, we are trying to only one topic at a time. So again, it will not be clutter, but eventually we can even increase two or three topics, but not more than that, right? So again, it should make sense. So learn something new daily. You will find some new points, and it will be easy to grab that information. It should not be clutter or overwhelming. So that is the concern. So I hope this making sense, and if you agree with this or aligning with this, please thumbs up. And now we are going to the combine. So yeah. So yeah, let me run a quickly one poll. I want to know whether you like what the people have, right? They are pretty much comfortable, or they haven't started, or haven't like even see the code of combine. So let me quickly, just a minute. So again, it's not about SwiftUI plus combine, it's only about combine. So it doesn't matter. Even you can, maybe the case you are using combine with UI kit as well, that also possible, or that also companies do, or you are using combine with SwiftUI. So whatever it is, right? So I'm launching one poll. You can quickly see. Let me just a second.
Yeah. So poll is live. You can see it. Yeah, it's live now. So there is a four ratings. Normally, I take on these topics whenever we go with the new session topic. So one is like you not at all confident in combine. You don't know the basics of combine, or not like it's very new to combine. Like okay, very big. Then five is like basic understanding you have, not that much. Eight is like a pretty good understanding you have, and 10 is like your pro in combine. So it's like that. So please do vote. I want everyone vote. It should be interactive session. Okay, it's not like I'm just saying and you're not interacting at all. Please don't. It should be like in both the ways. Yes, Abhishek, we have recording of all the thing, all the sessions previous. You can check in the group. I have mentioned all the links there in our group description. You can find. Okay, poll. If you're not able to see if someone joined later, then you can simply in the group in chat section you can message your combined rating either 1, 5, 8 or 10. 1 again means you are very beginner, fresher in combine, haven't explored as such. 5 a very basic understanding. 8 is like a good, pretty good understanding, and 10 is like a pro in combine. In 76 people, but only 50 votes. So again, 25 people doesn't vote basically so far. So please do vote, guys. Please vote, everyone. Please vote. And I hope you're able to find the poll section. Someone can please explain where the poll section is because some people struggle with to find the poll section. Anyone please explain where to find the poll section because I'm again the admin side, so you can guys better explain from at your end Yeah, how you. Yes. actually It's in on the tools section. activities section. And the meeting tools, just next to chat with everyone. Okay, meeting tools just next to chat section. Okay, so please check, guys. If you're not able to find the poll section, do find there and do just drop your vote quickly. So we are ending the poll in like 10 to 20 seconds. There is a square grid with 9 dots. Click on it and cool. Yeah, if it is you are joining from mobile, I think there's a more option down there, and when you click Yeah. on that, there's Mhm. a called activities, and it's instead activities. Okay. Whoever joined from mobile, please follow these steps. This Bobby shared this. Okay, cool. So again, still we get 62 and 3 4 people. Okay, fine. So most of the people already dropped their votes. So thank you. I'm ending the poll. So what if you can see, out of 60 votes, 30 people are at one. Basically, we can say 50% audience are not at all comfortable with combine. They don't know combine. They are not as such aware about combine, right? That we can conclude. And 26 votes for five. Basically, they have very basic understanding. And only five people said eight, which they are already at pretty good understanding of combine. And no one votes zero. No one votes for 10. That is fine. Okay, so okay, thanks for voting. At least we got key. Okay, how much audience are pretty good at it or not good at it basically. Cool. So what is combined? So I have one basic doc. Let me share and then we'll discuss on this. Let me share my screen. Okay, is my screen visible? Yes. Please acknowledge. Yeah, thank you. So Yes, guys, yeah, visible. what is combined? Right? Yeah, yes. Thank you. So I hope, matlab, I'm not assuming that everyone have worked in RxSwift, but yeah, I think most of the people or few of the people at least have worked with RxSwift, right? Even like in my journey when I started my career, in my initial projects they are using RxSwift, so I've done pretty good work in RxSwift in my multiple projects or in my multiple companies. But yeah, again, this is not the case with everyone, so it depends. But yeah, if you are already aware about RxSwift or worked in RxSwift, then you can simply relate to it because it's similar to like RxSwift. Combine is somewhat similar to RxSwift. But yeah, it's an Apple's framework, and that was a third-party framework.
So that's how Apple come up with this framework finally, which we are actually waiting for since long years. At that time, RxSwift was dominating this kind of reactive programming framework stuff or reactive programming stuff. Then Apple officially launched their own framework basically. So how it works, or basically it is, you can say it's an asynchronous event-driven programming. Uh, and you can say like there's a concept of publish or subscriber, or some consumer, somewhat kind of, you can say, emitting values. Someone is like listening these values and then emitting those values, or you're doing some action on this basically whenever you are receiving some events. So it's a basically event driven stuff, but we'll come to that. But today we're going to basically understand, okay, what it is, what are the building blocks, and how it's different from the traditional UI kit wala stuff or traditional iOS. Okay. You can say it's a basically some, yeah, you can say it is an observer pattern. So even I hope you pretty much aware about these things, matlab observer pattern or RxSwift or these kind of stuff. So first, before combine, I will go to this part. Don't go with this. Let me share you one more doc I have where I'm comparing traditional iOS with combine. Okay, let me switch the tab. Okay, now this doc is visible. Please acknowledge once, thumbs up once. Traditional iOS versus combine, right? Yeah. So because I hope everyone, we are here basically most of the senior software engineers, and we are from UI kit background, right? We are UI kit people. So or traditional iOS, right? Since last 5, 10 years, 8 years, 12 years, we are using these stuff, right? So we simply compare, so you better relate these things, right? So now let's come. So in basically in traditional UI kit or traditional iOS, what we supposed to do, like these kind of things which are actually combined solving in reactive way. So we basically use delegates, we use target methods, we use notifications, KBO, or completion clauses. And these kind of we recently discussed in our group clauses we already discussed, right, yesterday itself. So normally this kind of patterns we are using since long. But what are the problem here and how it is solving in combine, or how it would be better in combine? So again, let me give you the again, which I told multiple times, ki SwiftUI is pretty easy and clean, a smoother experience. And Apple trying to make things better, okay, not making things complex or tough, right? Whenever something new comes up, it comes with a good intention and to make things more, better, cleaner, and smoother, right? That you can thumbs up, right? So again, with the combine, the same thing. You already doing these things with UIKit, right? Since long years, we are doing these things. We are using delegates. We even still we use delegates, right? We use target method. We use notifications, KBO, and completion clauses in day to day. But then eventually, this Apple comes up with this, and again, so many people in the world, they are using RxSwift. So that's an alternative to RxSwift because it's an again core framework by Apple, and we already know in mostly product based company or even in any of the project, it is recommended to use core libraries but not use third party libraries, right? So to avoid, because RxSwift is a third party, even though it is reliable, but again it's a third party, so yeah, it is not recommended to use third party until and unless it's very important or it is more like so many people are using or like reliable. But again, there is a concern of third party. So Apple tried to make things better and to come up with, so what, something good is coming, right? Something good. So whenever you should have this kind of opinion, which I feel personally, see, like compare again with Swift concurrency, like async await we already seen in our previous sessions. So we used to do normal our traditional API calling, right, with our URL session, data task, and all that. And we have again their completion closures code, which is not that clean code. We basically writing 10 lines of code to make a simple API call, 10 12 lines of code, and again it's not that clean. It's a kind of not amazing code or clean code or readable code. But yeah, we are used to it, so we quickly, obviously, we read that code and understand. But for new people, maybe it's not that readable. And again, it's we so Apple come up with async await with some good approach with more clean code and more error handling and stuff. So basically there we need to do manually these things.
Now they actually handling, or in a easier way or smoother way, cleaner way, they are basically handling. If I'm comparing with async await with the traditional API calling code, that completion closure wala part. So similarly, if you see, if something new comes up, obviously they are improving something in some way or other way. So you can see we are following this kind of pattern. Then each API here has an inconsistent in syntax, because you can say like there are ways to, you can not like fixed code, you can have some variation of it while calling the API code. Okay, I'm saying again in the context of traditional API, traditional iOS. Okay, the old code. Okay, then you again keep, you need to track of state manually in our again old matlab, which we are used to follow in from last 10 12 years. Then memory management issues also happen with closures, right? Return cycle issues also happen. Observer wala thing, we need to remove observers manually, right? And also event flow is hard to visualize because logic is scattered. This is very important point which I'm talking about. Let me bold this point. See again that which I'm talking about now, that API closure, completion closure calls. So the basically because of the code is in such a way, it sometimes it's confusing to visualize the logic, how it is working. Okay. So we'll see two examples. You maybe relate better later. So see here there is one simple example. You are calling here. There's one wrapper is there, service wrapper in which API calling is happening. Whenever you call this API, you're getting the data, and based on that data, you basically reloading your table view, right? So you're getting the data, you're setting your data basically, and then you're reloading your table view. But if you get an error, then you will do some stuff here. But here normally right now only the print statement is there. So if you see what is the point here, mixes networking, error handling, and UI logic in one place. Again, it's very important point. Again, if someone asks you an interview, you can highlight these points. So what is happening here? If you see, networking call is happening here, error handling also happening here, and UI logic is also happening here. How it is happening here? See, so basically, networking call. Then I'm saying here, basically your UI logic, because we are reloading, right? Somewhat you can say UI logic here, and here basically we are doing error handling. Error handling. Okay, I hope you're getting a point. So again, this is not good, or there are better approaches to do this. So let's come to the combine. How combine improving this? And how there is a chain like of operations which we are showing here, like fetching one, then transforming, filtering, and then updating UI basically. But okay, let's go to the combine part. So what combine is doing, and there's a consistent syntax. So there is a consistent syntax for network responses, UI events, timers are there. Then we have code data also. We'll come to this later on, and notification center and all that stuff. So no need to remember different APIs for different async sources. Okay. So let me go to the code, then you will be relate better. But basically, if you see this is basically declarative and composable. So you describe the data flow instead of writing step by step imperative logic. Again, it is, you can relate to the SwiftUI, right? It is a declarative, and our UI kit is an imperative, right? So here we basically declare the flow in the way we do in SwiftUI. We know already we covered some basic sessions on SwiftUI. So in you see in SwiftUI what we are doing, we defined, or I can say states, right? Declaring the state, okay, in this state this should happen, in this state this should happen. So again, take an example of, you can say, toggle, okay, or button, or something like that. Okay, okay, if it is selected then show this, if it is non-selected show this, something like that. Take it. Similarly, in combine, you can also do these things, because again it's a declarative approach. We can define key some action comes, and if it is action of this type, do this, or not, then do this. And again we have again here callbacks for, like, if you get API finished, then you get a finish callback. If you receive the value, then there is a callback function for received value.
then you can do their stuff. Like once you get the value, you want to load that value to show the data, reload your UI, all that stuff you can do there. Okay, something like that. And we have operators also. Again, if you again comfortable with RxShift already, you know there are operators there in RxShift, similar operators here also. You can thumbs up once, whoever comfortable with RxShift or use RxShift, thumbs up please once. RxShift guys, yeah. So already aware about RxShift, then it's pretty easy to grab. But even though not a problem, if you're not aware or haven't used RxShift so far, not a problem. Again, it's combined very easy stuff. Not a complex. It's just like मैं कहूँगा सिर्फ एक डर रहे हैं हम लोग because we haven't used it so far. But डरने की कोई जरूरत नहीं है. If you see the basic stuff and how actually these things are behaving, or I can say, how it is better than your again traditional stuff, then eventually you liking these things and you basically in day to day you're going to use these code in your projects or in your company or in your freelancing, whatever. Making sense? So let's come to the so what are the benefits you're getting here? Like here basically you're automatically your memory and lifecycle handling is happening. Okay. So there is one or two things you need to just set up it up, or like you just set up or configure, then they will handle automatically. But in our again traditional stuff, we need to handle manually those things. But here automatically these things are handling. Then again there is a thread management stuff. So again you remember whenever in again traditional API calling, we used to call API, we get some data, and then we do dispatch.main.async, and then we do table view reload. Everyone remember that? So we intentionally need to switch the threads. Sometimes we need to go background thread, call the API, then comes to main thread, and then reload the UI. These things you do now. It's very common case for in iOS, right? But here thread management also kind of provided by Combine while you calling API or performing any task. So then you can mention there itself कि once you receive that data, then on which thread you want to perform that operation. There is again callback function for that, or closer you can say. Okay. So there is one, this thing is there, receive on. Here you can mention your thread scheduler or thread where you can mention main thread, and then you can do your UI updates basically. Okay. So no more this kind of code is required. This is replaced by this. See. So again, it's making code more cleaner, and again, it's like taking care of your thread management and your lifecycle handling, memory handling, all stuff. Again, kind of you're mentioning these things, but in more better and cleaner and smoother way. Okay, this also and this meaning the both are have the same meaning. Okay, so this code dispatch main.async also means ki, okay, run your code on main thread asynchronously, and this also saying the same thing ki, okay, whenever you receive the data, then you run that particular code on main thread asynchronously. Okay, both have same meaning. Point D. Point D I'm explaining, yeah. So normal API calling we do na normally, right? Where you get the data and then you call dispatch on main.async to load the data, right? For UI updates. So that thing basically covered with this. We come to the code, then you will more relate. So for now, don't worry. Okay, we are just overviewing the stuff. We'll come to in detail part and the code part, then you will relate it better. Okay, so again, one more thing here, the very important concept. You can bind actually your data with the UI elements. It is very, very good concept. We again used to do this thing in our RxShift. So similarly here you can bind basically. So suppose take an example of UI button. So you can bind a UI button with the action, and that basically action is bind. So whenever you click on your button, that again you basically what you're doing again we normally again do in UI button this target action thing, right? So similar things you can do through Combine, and it's very again easy and cleaner stuff, and again but it's better approach basically. So while we go into the code, you again you can relate better way. But for now you can just understand कि okay ये एक better approach है. यहाँ पे हम लोग easy to again binding the things, declarative approach, और ये Swift के साथ बहुत seamlessly ये integrate हो जाता है. Very seamless integration is there. ठीक है. We'll come to the code part, Deepak. Please please wait for some time. Yeah. ठीक है. So
There are the concept of publishers. We already see, in SwiftUI, we have seen that wala thing, right? That is a concept of combine basically. Okay, so we used to define in our model or view model published. So whenever some data gets changed, it publish or it notify basically, and then your UI updates. Remember publish wala concept? You can thumbs up, please. Everyone, yeah. We already seen that thing. Publish wala concept, same concept here only, and it comes from SwiftUI only. Okay. Sorry, it's come from Combine only. It's a part of Combine. It's a part of reactive programming. It's a part of Combine framework. ठीक है. तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि जब भी इफ यू वांट टू अपडेट योर यूआई देयर इज अ वे. No, it's not like that. Coding queen. Combine can be used with UI kit, can be used with SwiftUI. Doesn't matlab, it's not like it's a hard coded bounded key. Okay, it's not like that. So that's why initially I said key either you use Combine with UI kit or SwiftUI. Both in both ways you can use. But yeah, there is our advantages. Ki it's recommended to use Combine with, because again seamless integration is there and both are declarative. So this is a really a great combination if you use Combine with SwiftUI. But if you use Combine with UI kit, so obviously your code will get more matlab improved obviously in API calling and all that stuff. But yeah, eventually if you're moving to SwiftUI, then it is recommended to use Combine. But suppose if you're still using old traditional approach with SwiftUI, that is actually not recommended. I hope you get my point. Okay, so there is a last comparison for this key. What is, so basically there is a consistent code, publisher subscribers are there. Okay, then threading wala part, जैसे मैंने बोला, manually we need to manage those things. यहाँ पे you have receiver and you have subscribe one also. We'll come to this part. Then eventually you will relate. Okay, and there यहाँ पे scattered code नहीं है. There are more cleaner code. And again there is a cancelable is there which actually taking care of your, you can say, okay, I will come to that part in the code itself. But you can say right now you can see how to cancel async task, and यहाँ पे automatically cancellation is happening. Okay, again this is a really great feature which is provided by again Combine and Apple under Combine. So yeah, that's a great thing. So then manual cleanup of observers, and यहाँ पे ऑटो क्लीनअप हो रहा है. ठीक है, अगेन जो कि मैंने बोला मेमोरी मैनेजमेंट एंड लाइफ साइकिल वाला चीज ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है. ठीक है, इन अंडर कंबाइन बाय यूजिंग दिस कैंसिलेबल एंड नो बिल्ट इन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पावरफुल ऑपरेटर्स. हाँ, यहाँ पे अगेन अभी हम लोग एवरीवन नोस कि व्हेनेवर वी यूज ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग इन iOS either in API calling or any other context, तो वहां पे अगर आपको मान लो if you want to transform some data, want to do some higher order functions, तो आपको manually use करने पड़ते हैं between two collections, between two objects, whatever. यहाँ पे you have operators. ठीक है, again these are kind of operator which is like map, filter, combine, latest and all other operators also there. Like similarly in RX suite we also have operators. Similarly here also we have operators. ठीक है, I can quickly give you the list. Combine operators. Let me just share you one. Let me know, is that medium block screen is visible, right? Thumbs up once. Yeah, thank you. तो देखो यहाँ पे भी कई सारे ऑपरेटर्स हैं. अगेन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इफ यू RX में यूज किया है तो यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस, बट ये नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है. तो these ऑपरेटर बेसिकली क्या करते हैं, ये लोग दो डेटा को इवेंचुअली यू कैन से कुछ ऑपरेटर आप अप्लाई कर रहे हो, कुछ फंक्शनैलिटी आप अप्लाई कर रहे हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, डेटा क्लीन कर सकते हो, दो डेटा को दो स्ट्रीम्स को मर्ज कर सकते हो विद प्रोवाइडिंग सम लॉजिक. ठीक है, इस तरह की चीजें करते हैं हम लोग. तो आप ऐसी कुछ चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो. अगेन मैं आपको बता दूं, जो लोग दे आर अटेंडिंग फर्स्ट टाइम, हम लोग अप्रोच ऐसा रहता है कि वी स्टार्टेड द टॉपिक, देन इवेंचुअली आई गिव यू आल्सो टाइम कि अभी आज हम लोग जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं कंबाइन का. आप लोग खुद से भी अपना एक प्रिपेयर करके आओगे, होमवर्क करके आओगे, एंड देन वी एक्चुअली कम टू द टॉपिक इन डिटेल. तो दैट मेक्स मोर सेंस, क्योंकि आई अज्यूम कि हम लोग वी आर नॉट कॉलेज स्टूडेंट्स, राइट? वी आर नॉट फ्रेशर्स एंड वी डोंट वांट स्पूड फीडिंग. बेसिकली it actually affects you also. If you learn yourself and try some efforts and do some experiments and R&D, it eventually helps everyone.
and that actual learning is really makes sense. Okay, I believe in this. I hope this makes sense. Okay, so I personally believe in this. So I'm making sure ki again, this is not a random, school class or college class, right? And again, we are not a college or school student, right? So you just brief about, at least you're aware about these things, right? जैसे हम बोलते हैं ना कि एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि भाई इस तरह की चीजें होती है. एटलीस्ट यू शुड नो दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर देयर. देन यू एक्सप्लोर योरसेल्फ, डू सम एक्सपेरिमेंट्स, कम अप विद योर सम अंडरस्टैंडिंग एंड सम. क्योंकि क्या होगा, अभी जब आप ट्राई करोगे आपके माइंड में कुछ तो परसेप्शन होगा उसको लेके. You will try some things, you will get some understanding of combine, some basic stuff of combine. You go on over internet, do some stuff, ठीक है, find out some articles, go on YouTube, ChatGPT, whatever, or Medium blogs, or even Stack Overflow, whatever, okay, or Apple official doc, okay, and at least see some stuff. मतलब देखना शुरू करो एटलीस्ट, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आएगा. और फिर जब हम उस टॉपिक पे बात करेंगे, उसके ऊपर एक क्वेश्चन कुछ कोड करेंगे या उसके लिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे, तो वो ज्यादा सेंस बनाएगा और सब लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे. आई होप आई मेकिंग सेंस, दिस मेक सेंस, राइट? तो इसलिए अभी मैं एक्सकोड नहीं खोल रहा हूँ, ठीक है, इंटेंशनली. आई हैव ऑलरेडी वन सैंपल प्रोजेक्ट, बट आई वांट कि आप लोग पहले एक बार देख के आओगे. हम नेक्स्ट सेशन में एक्सकोड में घुसेंगे, ठीक है. विल गो कम टू द नेक्स्ट सेशन इन एक्सकोड. सो अगेन बैक टू दिस. तो वी हैव सम ऑपरेटर्स, ठीक है, जो कि आपका जैसे अभी एक बहुत बेसिक एग्जांपल ले लो. यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल अपन देखेंगे. यहाँ पे आपको मैप वाला देखो. अभी वी ऑलरेडी नो अबाउट मैप फंक्शन, राइट? तो यहाँ पे क्या कर रहा है अगर आप देखोगे, दे आर बेसिकली अपेंडिंग फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, राइट? तो अभी आप देखोगे यू हैव यूजर्स नेम एंड लास्ट नेम, उसी पे इसने ऑपरेटर लगाया और दोनों को कंबाइन कर दिया है बेसिकली, ठीक है. इस तरीके से कुछ भी आप ऑपरेटर यूज कर सकते हो. फ्लैट मैप है, फ्लैट मैप हम स्टार्टिंग से करते आ रहे, राइट? वी आर यूजिंग सिंस बिगिनिंग. तो फ्लैट मैप आपका एक्चुअली कर देता ना, वो क्या कहते हैं, नेस्टेड एरेस को सिंप्लीफाई कर देता, राइट, काइंड ऑफ. तो वो चीजें हो गई, ठीक है. उसके अलावा आपका और भी ऑपरेटर मिल जाएंगे आपको. फिल्टरिंग ऑपरेटर्स है, देखो ये बहुत काम की चीज है. तो अगेन जैसे मान लो यू हैव, देखो यहाँ पे देयर इज वन कलेक्शन ऑफ विच इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ 1 to 10. एक बेसिक एग्जांपल लिया. अब इसमें आई वांट नंबर्स ओनली मल्टीपल ऑफ 3. तो सिंपली अभी आप अगेन इसी कलेक्शन को आप बेसिकली आप फिल्टर कर सकते हो और फिर उस अकॉर्डिंगली आपको डेटा मिलेगा. तो ये सारी चीजें बहुत इजीली हो जाती हैं यहाँ पे, जो कि आपकी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में थोड़ा तामझाम होगा. और यहाँ पे इट इज वेरी इजी, आप इसके साथ खेल सकते हो आराम से. पॉइंट ये है, ठीक है. डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकते हो, देखो उसका भी डायरेक्ट फंक्शन दिया है, रिमूव डुप्लीकेट्स. काम की चीज है काफी. कभी मान लो इफ यू आर गेटिंग डेटा, इफ यू वांट टू रिमूव डुप्लीकेट्स, सिंपली कॉल दिस फंक्शन इन कंबाइन, देयर आर अवेलेबल, मतलब रेडीमेड फंक्शंस आर देयर, ठीक है. तो इस तरह के ऑपरेटर फंक्शंस चीजें होती है. मैं अगेन इस आर्टिकल को शेयर कर दूंगा और आप अपने एंड से भी थोड़ा सा R&D करोगे. ये सारे आर्टिकल्स इजीली अवेलेबल है. पॉइंट ये है कि सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करना है, ठीक है. तो खुद से थोड़ी चीजें देखनी है, फिर हम उस चीज पर काम करें तो मेक्स मोर सेंस. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग वापस. मैं उस पर आता हूँ. लेट मी क्विकली जस्ट एक बार बताना मेरा ये वाला टैब आ गया वापस. तो हम यहाँ पे थे, राइट, ट्रेडिशनल इसमें. तो मैनुअल क्लीनअप और बिल्ट-इन डेटा, हाँ, इस पे हम चले गए थे ऑपरेटर वाली चीज पे. मैं आप लोगों को अगेन एक होमवर्क टास्क लेना इसको एज अ. आज थर्सडे है, हमारा नेक्स्ट सेशन मोस्टली सैटरडे को होगा या संडे को होगा. आई विल लेट यू नो. तब तक यू हैव 1 or 2 days ऑफ टाइम, मिनिमम यू हैव 2 days ऑफ टाइम. तो 2 दिन में जितना भी, जब भी टाइम मिले, व्हेनेवर यू गेट अ फ्री टाइम, आप स्टार्ट करो अपने एंड से भी. स्टार्ट लुकिंग कंबाइन बेसिक्स, ऑपरेटर्स, और अभी हम आ रहे हैं उस पे पब्लिशर, सब्सक्राइबर, ऑल दो स्टफ एंड सम बेसिक कोड बेस, ओके. तो आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे उस चीज को, ठीक है. तो अभी जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि ट्रेडिशनल यूआई किट में हम जब सर्च बार को इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें ये इतना तामझाम करना पड़ता है. उसका डेलीगेट इंप्लीमेंट करते हैं. उसके डेलीगेट में मान लो द पॉइंट इज, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हियर इज कि व्हाट वी आर डूइंग हियर, कि व्हेनेवर यू हैव अ सर्च टेक्स्ट फील्ड, यू टाइप समथिंग, तो वी आर हिटिंग सर्च एपीआई, राइट, समथिंग लाइक दैट फ्रॉम बैक एंड, ओके. फ्रंट एंड पे क्लाइंट साइड सर्चिंग नहीं हो रही है, इट्स हैपनिंग थ्रू बैक एंड, सर्वर साइड. तो उसका उस कंटेक्स्ट में कोड दिया गया. अगर आप देखोगे यहाँ क्या हो रहा है, जब भी टेक्स्ट चेंज हो रहा है, हम एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं, हम फैच कर रहे हैं रिजल्ट्स को. वी आर कॉलिंग दिस फैच फंक्शन, ठीक है. और वो फैच फंक्शन क्या कर रहा है, वो एक्चुअली एपीआई कॉल कर रहा है, राइट. वो एपीआई कॉल जा रहा है और फिर फाइनली जब भी डेटा आएगा, यू आर एक्चुअली अपडेटिंग योर यूआई, राइट. तो लॉट्स ऑफ बॉयलर कोड होता है और यहाँ डीबाउंस और इसमें ना दिक्कत होती है. मतलब कर सकते हो बट क्लटर है थोड़ी चीजें. अब कंबाइन में चीजें बहुत सिंप्लीफाई कर दी है इन्होंने.
इन्होंने डायरेक्ट आपको डीबाउंस फंक्शन दे दिया एक तो डायरेक्टली, उसमें आप खुद ही लगा लो कि कितने डीबाउंस का आपको रखना टाइमर, ठीक है, जो कि देखो यहाँ पे 500 मिली सेकेंड है, तो उतने का वो ऑलरेडी मेंटेन करेगा। फिर डुप्लीकेट्स आप रिमूव कर सकते हो, जो कि अभी हमने देखा, फ्लैट में आपका दे दिया, फिर जब भी डेटा आएगा तो ये यहाँ पे सिंक में सारी चीज हो जाती है, और ये स्टोर उसके लिए वो होल्ड करता है उसके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इजीली मैनेज हो जाती है। तो अगेन मैं अभी, चलो उस पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, पर इतना समझो कि ये इतना सारा चीज इससे आराम से मैनेज हो रहा है, और इससे और बेटर वे में मैनेज होगा मतलब, ठीक है, पॉइंट ये है। तो ये चीज है। और कब कंबाइन ज्यादा एक्चुअली काम आता है, तो ये मल्टीपल असिंक सोर्सेज जब होते हैं आपके, तो ये आराम से उसके साथ स्मूथली काम करता है, कॉम्प्लेक्स चेंज को मतलब ऐसा कह लो कि इजी कर देगा। और लाइव फॉर्म वैलिडेशन अगेन ये एक एग्जांपल है, जैसे आरएक्स स्विफ्ट में हम बहुत करते थे ये चीजें, वी यूज्ड टू डू दीस थिंग्स इन आरएक्स स्विफ्ट, जैसे मैंने बताया ना वो डेटा बाइंडिंग वाला थिंग। Ankit, I'm not going into that part. We'll come to that part in the next session, okay? तो पॉइंट इज कि डीबाउंस आपका बेसिक सर्च का वो चीज होती है, डीबाउंस इफ अगेन यू कैन गूगल इट, ओके। तो पॉइंट इज लाइव फॉर्म वैलिडेशन इज ऑल अबाउट जो कि हम डेटा बाइंडिंग्स करते हैं, राइट? उस चीज को लेके, जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, आपकी 4 फील्ड है, आप कुछ टाइप कर रहे हो, एंटर कर रहे हो, और वो क्विकली उस पर रिफ्लेक्ट होती है चीजें, ठीक है, तो वो चीज है। और फिर अगेन रियल टाइम अपडेट्स, वेब सॉकेट वाली भी चीजें हैं, वो भी हम देखेंगे इस सब में। क्लीन सेपरेशन ऑफ डेटा प्रोसेस, जो हमने देखा स्टार्टिंग में ही, कि हम लोग व्हाट वी आर डूइंग हियर, कि अपन जो नॉर्मल ट्रेडिशनल कॉलिंग कर रहे हैं उसी में नेटवर्क हैंडलिंग भी हो रहा है, उसमें आपका यूआई कॉलिंग और यूआई अपडेट भी चल रहा है, पर ये कंबाइन में क्लीन सेपरेशन होता है इन सब चीजों का, ठीक है। तो अगेन इट इज रिकमेंडेड, ठीक है, तो ये चीज है। कूल, हाँ थैंक्स गाइस, आपने आंसर कर दिया यहाँ पे डीबाउंस। पर हाँ, मैं अगेन बोलूंगा कि अपने को खुद से चीजें देखनी है, ठीक है, वी आर नॉट अगेन कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स, तो खुद से चीजें देख के आना है, तो सो डैट कि हम फिर उस पर एक्चुअली बात करें या चीजें देखें और डिस्कस करें, मेक्स मोर सेंस, ठीक है। तो अभी क्विकली एक बार मैं कंबाइन के बेसिक डॉक पे जा रहा हूँ, और फिर हम लोग आज का सेशन रैप अप करेंगे, और हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंबाइन पे डीप डाइव करेंगे ऑन द कोड बेस। अगले सेशन में डॉक नहीं खुलेगा, डायरेक्ट एक्सकोड में जाके हम प्रोजेक्ट्स में घुसेंगे और वहां पे देखेंगे कैसी चीजें वर्क कर रही है, ठीक है। सो लेट्स गो टू द बेसिक्स ऑफ कंबाइन। तो यहाँ पे देखो, मैं बस आपको अगेन, मैं आपको जस्ट आई एम ओवरव्यूइंग दिस थिंग्स, कि एटलीस्ट यू शुड नो कि ऐसी कुछ चीजें होती है, आपको एटलीस्ट टॉपिक्स पता होने चाहिए, बाद में आप उसको जाके पढ़ सको और उसको एक्सप्लोर करो तो चीजें आप रिलेट कर सको, इतना वाला चीज है, ठीक है। तो एक पब्लिशर करके चीज है, पब्लिशर में 3 पॉसिबल इवेंट हो सकते हैं, अगेन वेरी कोर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कंबाइन, कि या तो वैल्यू देगा या कंप्लीशन में आपको बताएगा फिनिश हो गया कि नहीं, या फिर एरर दे देगा, इतना समझ सकते हो अभी के लिए। आइदर वो कोई नेक्स्ट वैल्यू दे रहा है आपको, या फिर वो आपको कोई कंप्लीशन का बता रहा है कि भाई आपका इवेंट फिनिश हो गया है, आइदर मतलब ऐसा कुछ आपको मिल रहा है, या फिर वो बोल रहा है कि भाई फेल हो गया, मतलब फेलियर हो गया, एरर आ गया आपको, ठीक है। तो अभी जैसे हम एपीआई कॉलिंग करते हैं तो ऐसा ही होता है, इधर वैल्यू आती है, आइदर कंप्लीशन हमको मिलता है फिनिश हो गया, या फिर हमको एरर मिलता है, ठीक है। इस तरीके से 3 पॉसिबल इवेंट्स है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल ये आप अवॉइड करो अभी के लिए, इग्नोर, यू कैन इग्नोर। फिर सब्सक्राइबर में कैसा है, जैसे अगेन आरएक्स सॉफ्ट वाले लोग कैन रिलेट, बट अगेन आरएक्स सॉफ्ट नहीं किया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सब्सक्राइबर का, कि कोई तो किसी को सब्सक्राइब करके बैठा है। एग्जाम्पल के लिए यूट्यूब का एग्जाम्पल ले लो, यूट्यूब में अभी जैसे मुझे लगता है अपने iOS लाइव को भी लोगों ने सब्सक्राइब किया, राइट? तो अभी कोई भी एग्जाम्पल ले लो आपने, टी सीरीज, ठीक है, कोई भी चैनल अपना, बीबी की वाइन्स, एनीवन, ठीक है। पॉइंट ये, जो भी आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल है, आपने उसको सब्सक्राइब करके रखा है, तो वहां पे एक बेल आइकन होता है, राइट, फॉर ऑल नोटिफिकेशन, तो वो एक सब्सक्राइबर वाला चीज है। तो अगर आप नहीं भी दबाओगे तो भी इनके इंपॉर्टेंट वीडियोस के यू विल रिसीव द नोटिफिकेशन, बट इफ यू इनेबल दैट बेल आइकन इंटेंशनली फॉर ऑल नोटिफिकेशन, तो फिर जो भी अपडेट आएगा, एनी अपडेट फ्रॉम दैट चैनल, यू विल रिसीव अ नोटिफिकेशन। तो वही वाले कॉन्सेप्ट से इसको सब्सक्राइबर बोला गया है। तो अगर कोई अपना ऑब्जेक्ट सब्सक्राइबर करके बैठा है, तो वो जब भी वैल्यू पब्लिश करेगा, इस सब्सक्राइबर को कॉल बैक मिलेगा और फिर वो उस वैल्यू को यूज कर सकता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। अगेन इसको रेडियो वाला एग्जांपल से भी लोग बोलते हैं, कि एक रेडियो वो ट्रांसमिट कर रहा है और फिर इसको जो जो लिसन कर रहे हैं तो उनको वैल्यू मिल जाएगी, इस तरीके से। और यूट्यूब वाला एग्जांपल भी काइंड ऑफ, कि भाई सब्सक्राइब आपने कर रखा है तो आपको आ जाएंगे, जैसे न्यूज लेटर हो गया, अगेन टेक एन एग्जांपल ऑफ न्यूज लेटर, इफ यू सब्सक्राइब फॉर दैट न्यूज लेटर, तो जो भी वो न्यूज लेटर पब्लिश करेगा आपको मेल आ जाता है, राइट, मेकिंग सेंस।
ये वाला कॉन्सेप्ट है, बस कोडिंग के अंदर है ये। और अगर रियल लाइफ में हम यूज करते हैं ये चीजें, राइट, वी ऑलरेडी अवेयर अबाउट व्हाट सब्सक्रिप्शन और सब्सक्राइबिंग मींस, राइट, तो वो तो हमें पता ही है, ठीक है। तो वो वाला चीज है सब्सक्राइबर। फिर ऑपरेटर ने ऑलरेडी देखा, हाँ दीपक कह सकते हो काइंड ऑफ नोटिफिकेशन ऑब्जर्वर, पर अगेन उससे बेटर अप्रोच में ये चीज है। तो ट्रेडिशनली तो नोटिफिकेशन ऑब्जर्वर था ही अपने पास, पर एप्पल और कुछ बढ़िया लेकर आया, ठीक है। तो एप्पल इंट्रोड्यूसेस कंबाइन में जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिश सब्सक्राइब, अगेन इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ रिएक्टिव प्रोग्रामिंग। तो रिएक्टिव प्रोग्रामिंग में चीजें ऐसे वर्क करती हैं। तो अगेन उससे बेटर अप्रोच है, वो आप देखोगे इवेंचुअली यू विल रियलाइज कि यस कुशल, दिस combined concepts or combined fundamental programming is far better than our traditional delegates वाला thing, notification observer, KBO, all that stuff, और completion closures, callback, ये सारा मैच्ड अप चीजें क्लीन कर दी और बहुत स्मूदर वे में चीजें चलेंगी, ठीक है। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, आफ्टर फ्यू सेशंस ऑफ कंबाइन हियर इन iOS labs, you definitely love combine and you will eventually use combine in your day to day projects or in your freelancing or in your companies, ठीक है। तो अगेन बट आई नीड योर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रखना कि खुद से भी एफर्ट लेना है। हम एक्चुअली टास्क भी देते हैं, असाइनमेंट्स भी देते हैं। आज तो मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हम जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं। तो ये आपका टास्क है कि आपको अगेन जैसे 2 दिन का टाइम है, यू हैव 2 days ऑफ टाइम, यू नीड टू अगेन एक्सप्लोर करना है, थोड़ा ब्रीफ करके आना है, थोड़ा एक्सप्लोर टॉपिक्स देख के आना है, थोड़ा कोड बेस खुद से हैंड्स ऑन करके आना है। दैट इज हाईली रिकमेंडेड। तो हम फिर कोड में घुसेंगे, ठीक है, अगले सेशन के अंदर। तो अभी हम लोग ऑपरेटर अगेन जो हमने देखा, देयर इज अ ऑपरेटर में आप चीजें कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक बहुत बेसिक एग्जांपल दिया है कि ये 1 2 3 है, इसमें मैप फंक्शन लगा दिया और सबको 2 से 2 कर रहा है वो, राइट। तो क्या मिलेगा आपको रिटर्न में 2 4 6 मिलेगा, राइट। 1 2 3 को मैप फंक्शन लगा दोगे, जो कि नॉर्मली वी यूज करते हैं ना हम लोग, नॉर्मली वी यूज मैप फंक्शन, राइट, विद एरे विद कलेक्शंस। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। देखो एक बात ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट्स बदले नहीं है, कॉन्सेप्ट्स अभी भी वही है। यहाँ पे भी मैप का मीनिंग वही है जो कि नॉर्मल अपने iOS में होता है या नॉर्मल स्विफ्ट में होता है। और अगेन जो सब्सक्राइब पब्लिशर का कॉन्सेप्ट जो रिएक्ट RX स्विफ्ट में था वही यहाँ पे। और अगेन वही मैं कह रहा, मतलब जो बेसिक चीज है वो सेम ही है, उसमें कुछ बदला नहीं है। बस आप कंबाइन के कंटेक्स्ट में हम थोड़ा सा देख रहे हैं, और फंडामेंटली दे आर सेम, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट। फिर सब्जेक्ट करके एक चीज होती है अगेन जो कि काम आता है पब्लिश करने के लिए। उसमें एक होता है कि हिस्ट्री होल्ड करता है, नई वैल्यू देता है, और कोई लेटेस्ट वैल्यू देगा, कोई लेटेस्ट वैल्यू नहीं देगा, या लास्ट वैल्यू नहीं देगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट है। अगेन मैं बहुत अभी ऊपर ऊपर सी चीज बोल रहा हूँ जानबूझ के, कि मैं चाहूंगा आप लोग खुद से एक बार देख के आओ ये चीजें, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग लो उसका पहले। विल कम टू द पार्ट कि एक्चुअली क्या है इनका डिफरेंस, ये आपको देख के आना है। दो तरह के सब्जेक्ट है, काइंड ऑफ पास थ्रू सब्जेक्ट एंड करंट वैल्यू सब्जेक्ट, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। इसका नेवर का मीनिंग क्या है, ये वैल्यू को मेंशन करता है। जब आप पास थ्रू सब्जेक्ट बनाते हो, आपको यू नीड टू डिफाइन कि किस तरह की वैल्यू आने वाली है। अगेन हम RX स्विफ्ट में करते थे ये चीजें, सेम चीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। इफ यू अगेन अवेयर अबाउट RX स्विफ्ट और ऑलरेडी यूज RX स्विफ्ट, तो आप यहाँ पे बता रहे हो कि भाई ये जो मेरा सब्जेक्ट है ये स्ट्रिंग वैल्यू ही देगा। मैं चाहूँ तो उसको इंट कर दूं तो इंट वैल्यू देगा, मैं चाहूँ तो उसको कस्टम कुछ कर दूं तो वो देगा, राइट। पर अभी के लिए स्ट्रिंग है तो हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रिंग वैल्यू देगा। और ये नेवर का कुछ मीनिंग है, ये मैं चाहूंगा आप खुद पढ़ के आना पहले कि इसका क्या सेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें हो रही है। फिर जब भी आप ये सब्जेक्ट बना के इसमें कुछ भेज रहे हो, देखो यहाँ पे भेज रहे हो आप, तो ये जो वैल्यू भेज रहे हो ये वैल्यू एक्चुअली रिसीव्ड होगी, और यहाँ पे इसको सिंक के अंदर मिल जाता है यहाँ पे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अगेन एक बेसिक एग्जांपल थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा पढ़ोगे, समझ जाओगे चीजें, पर अगले सेशन में हम आएंगे कोड वाइज, एक्स कोड में जाके देखेंगे चीजें। अभी के लिए इतना समझ सकते हो। एक आप अगेन जैसे हमने यूट्यूब का एग्जांपल लिया, ये एक यूट्यूब चैनल है आपका, ठीक है। ये चैनल क्या करेगा, एक वीडियो, क्योंकि यूट्यूब पे नॉर्मली वीडियोस ही आते हैं ना, पब्लिश जो होते हैं वीडियोस पब्लिश होते हैं। तो इससे समथिंग लाइक अगर मैं इसको ऐसा बोलूं, ये वीडियो पब्लिश करेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे नया वीडियो आएगा, कोई न्यू वीडियो आया भाई मार्केट में, मतलब उस चैनल का, और वो न्यू वीडियो मिलेगा। फिर आप बोल सकते हो कि लेट्स प्ले इट मैन, राइट, लेट्स प्ले इट, लेट्स प्ले इट। और यहाँ पे आपका वो न्यू, मतलब -0 है, पर मैं इसको जानबूझ के या न्यू वीडियो लिख रहा हूँ, पर इससे कंफ्यूज मत होना, ऑब्वियसली $0 रहेगा वहां पे, ठीक है। पॉइंट ये कि एक्सप्लेन, मतलब जस्ट टू गेटिंग द कंटेक्स्ट, ये आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ लिखा। तो यहाँ पे पॉइंट है कि यूट्यूब चैनल आपका वीडियो पब्लिश कर रहा है, वीडियो मिलेगा, आप उसको प्ले करो, और जब भी ये कोई भी नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप क्लिक करोगे वीडियो प्ले हो जाएगा, राइट। इस तरीके से ये चीज है, ठीक है। मैं अनडू कर देता हूँ वापस।
ठीक है, अगेन मैं कहूंगा आपको खुद से चीजें देखनी है प्लीज। जो भी लोग यहाँ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बुरा मत मानना, खुद से जाके यू नीड टू सी द थिंग्स फर्स्ट। ठीक है, इट्स अगेन मैं नहीं चाहूंगा, आई विल नॉट प्रमोट स्पून फीडिंग एंड आई वी डू नॉट प्रमोट कि आप बस जस्ट लिसनिंग एंड आप खुद से कुछ एफर्ट ना ले। तो प्लीज डोंट टेक इट इन रॉन्ग वे। अगेन वी ऑल आर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मोस्ट ऑफ द पीपल हियर। तो खुद से अगर एक बार भी एक आर्टिकल इफ यू फाइंड आउट और एनी गुड वीडियो, यू इजीली अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और फिर उस चीज पर हम अगर डीप डाइव करें, मेक मोर सेंस, राइट। तो उस चीज को थोड़ा सा समझना। तो प्लीज आई वुड हाईली रिकमेंड, डोंट आस्क बेसिक क्वेश्चंस हियर, पहले खुद से एक बार जाके देख लो, फिर उसके बारे में पूछो, तो मेक्स मोर सेंस। ठीक है, मेक मोर सेंस। Cool. तो ये चीज, और एक कैंसिलेबल एक चीज होता है यहाँ पे, जो कि अगेन मैं चाहूंगा आप पहले पढ़ के आओ, मैं इस पे भी बात नहीं करूंगा। कैंसिलेबल फर्स्ट यू सी, मतलब आप गो थ्रू करो उसको, देन वी विल डिस्कस ऑन कि कैंसिलेबल चीज क्या है और क्यों ये यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है, या क्या इसका रोल है कंबाइन के अंदर। ठीक है, तो बस बाकी फिर कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं, बट ठीक है, दैट वी कैन अवॉइड फॉर नाउ। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए अगेन, जैसे कि कुछ फिल्टर विल्टर लगा के खेल रहे हैं अपन, तो दीज आर द ऑपरेटर फंक्शंस बेसिकली। और यहाँ पे हम लोग डेटा कॉलिंग कर रहे हैं बेसिकली, मतलब एपीआई कॉलिंग है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको दिख ही रहा होगा, वी हैव वन वन एपीआई, उसमें मैं कॉल कर रहा हूँ, फिर उसको मैं मैप भी कर रहा हूँ, और उसमें फिर हम लोग ये भी बताने से मैंने इनिशियली डिसाइड वो डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो यहीं पे सब देखो डिकोडिंग भी हो जा रहा है इधर, फिर आप बता भी रहे हो कि जब डेटा आएगा तो आपको मेन थ्रेड पे चलाना है चीज। तो यहाँ से सारी चीजें हो जाती है। अब आप बताओ मुझे, इफ यू डूइंग इन ट्रेडिशनल iOS, तो आपको ये अलग से हैंडल करना पड़ता है, डिस्पैच डॉट मेन डॉट असिंक पे करते हो आप चीजें, जब डेटा आता है ना, आप टेबल व्यू पे रीलोड करते हो, फिर आप डिकोडिंग के लिए अलग से लाइन में लिखते हो कोड, उसका एक दो लाइन का अलग से कोड होता है, राइट, वो इन्होंने यहीं चिपका दिया। ठीक है, अब फिर एक्चुअल में डेटा आने के बाद आपको जो कुछ करना होता है वो भी आप करते हो, वो यहाँ से मैनेज हो रहा है। तो ये सारी चीजें मतलब ये 4 लाइन में हो रही है, जो कि इसके लिए आप 8 लाइन का कोड लिखोगे, और वो भी इतना क्लीन कोड नहीं होगा। पॉइंट ये है। इस बात को समझ पा रहा है कोई, थोड़ा सा जो रिलेट कर पा रहा है, थम्स अप प्लीज। इस बात को समझ पा रहे हो, जो आप काम करते ही आ रहे हो। ठीक है, अगेन फंडामेंटली थिंग्स आर सेम ओनली, सेम बिहेवियर, सेम फंक्शनैलिटी, हम अपन ऐसे कर पा रहे हैं, मतलब इतना सा मेरा कहना है। ठीक है, अभी के लिए अगेन इसको इग्नोर करना है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। पर अपन ये तो करते हैं ना कि डेटा आता है उसको मैप करते हैं, उसको डिकोड करते हैं, और फिर मेन थ्रेड पे उसको अपडेट करते हैं यूआई को, और अगेन डेटा आने के बाद अगर कुछ प्रोसेसिंग करनी जो भी वो यहाँ करते हैं। तो ये सारा चीज आपकी 4 लाइन में हो जा रही है, राइट, काफी बेटर और क्लीनर अप्रोच में। ये इसकी पावर है कंबाइन की। ठीक है, इतना अभी के लिए मैं छोड़ के, मतलब बोल के छोड़ रहा हूँ। और फिर ये चीजें भी हैं, सब्जेक्ट इन एक्शन इस पे नहीं आएंगे, एरर हैंडलिंग, ये भी चीजें हैं, बट ठीक है, लेट्स अवॉइड दिस फॉर नाउ। ठीक है, फिर अगेन ये एक एग्जांपल मैं कहूंगा कि यूआई किट से बेटर में यहाँ पे आपको ना चीजें मिल जाती है। यू हैव, जैसे डीबाउंस वाला चीज है जो आपको यहाँ इजीली मिल रहा है, रेडीमेड मिल रहा है, ऐसे ही आपको बटन टैप पे भी कुछ चीजें मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कंबाइन के अंदर इजीली मिल जाती है, जो कि यूआई किट में उसके लिए तामझाम करना पड़ता था थोड़ा। ठीक है, पॉइंट ये है। तो ये दैट्स इट, मैं आगे नहीं जाऊंगा इस चीज पे, अभी के लिए हम लोग आज यहाँ रुक सकते हैं। तो मुझे पता है इवन दो कि हमने जस्ट ओवरव्यू लिया है, पर इस सेशन का मेन इंटेंशन यही था कि हम जस्ट ओवरव्यू लें आज, एटलीस्ट आपको, आई होप कुछ लोगों ने कुछ नई चीजें सुनी, आज तक कंबाइन नहीं देखा। पर प्लीज मेक श्योर कि आप लोग फिर अब खुद से होमवर्क करके आना है थोड़ा सा। नेक्स्ट सेशन मोस्टली आइदर ऑन सैटरडे और संडे, बट आई एम रियली होपिंग कि आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के कंबाइन स्टार्ट विद जीरो, थोड़ा बेसिक्स देखो, फिर उस पर अपन डीप डाइव करेंगे, मेक मोर सेंस, फिर मिलके कोड करेंगे, मजा आएगा, और प्रोजेक्ट में कुछ बनाएंगे कंबाइन यूज करके। यूआई किट में भी मैं करूंगा, स्विफ्ट में भी करूंगा, दोनों में करेंगे हम लोग, आप भी करोगे मैं भी करूंगा, सब लोग करेंगे। और फिर आपको कुछ होमवर्क टास्क असाइनमेंट भी मिलेगा नेक्स्ट सेशन में। आज कुछ नहीं करना क्योंकि हम घुसे ही नहीं कोड में, आज हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया, हम कॉन्सेप्ट पे भी नहीं घुसे। मैं अभी भी आज मैंने कई चीजें स्किप करी जानबूझ के, तो वो कॉन्सेप्ट पे भी हम आएंगे, पर नेक्स्ट सेशन में आएंगे, क्योंकि आप लोग तब खुद की एक अंडरस्टैंडिंग लेके आओगे ना, तो सेंस ज्यादा बनाता है उन चीजों को डिस्कस करने का, राइट, मेक सेंस। तो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड टुडे। तो थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और नेक्स्ट सेशन का अपडेट मिलेगा, और इवेंचुअली मैं कहूंगा रिकमेंडेड कि कम्युनिटी में अपडेट रहो, यू विल इवेंचुअली गेट दैट व्हाट्सएप ग्रुप इनवाइट फॉर your referral and showcase your profile, first thing. Second, you will get, अगर मुझे लग रहा अभी भी people haven't joined in compile your skills group, right, और everyone joined, तो मैंने ऑलरेडी, यू कैन चेक द ग्रुप डिस्क्रिप्शन, वहां पे लिंक मेंशन्ड है, और मैं एक बार फिर से रीपोस्ट कर दूंगा ग्रुप पे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आई थिंक 100
अराउंड पीपल ही है। कंपाइलर स्किल्स में कितने हैं अभी लोग? लेट मी चेक। तो दैट इज ग्रुप एक्चुअली फॉर लर्निंग, मतलब काफी सही मुझे लगी वो चीज। इस पे अभी 1 to 5 है, ये वाले ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 to 5 पीपल आर देयर, ठीक है। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अगर डेली लर्निंग वहाँ पे हम एक टॉपिक लेते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था 2 दिन पहले, वी स्टार्टेड विद स्ट्रक्ट वर्सेस क्लास, फिर हमने लिया उसमें दूसरा टॉपिक क्लोजर्स, और आज हम लोगों ने लिया स्टोर्ड लेजी एंड कंप्यूटर प्रॉपर्टीज। वहाँ पे ओपन डिस्कशन होता है, चैट में ही होता है वो सारा, और उसका कंपाइल डॉक आपको मिलेगा कल। यू विल इवेंचुअली गेट द जो भी टॉपिक अभी तक हुए उनके डॉक्स मिल जाएंगे 1 by 1, ठीक है। और वॉलंटरली आई रियली थैंक्स फॉर ऑल द वॉलंटियर्स जो कि इसमें एफर्ट ले रहे हैं और जो हेल्प कर रहे हैं। सो सॉरी, तो थैंक्स एवरीवन, ठीक है। तो वी कैन रैप अप नाउ एंड सी यू ऑन सैटरडे और संडे। और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट भी हमारा चल रहा है, उसके लेके भी एक अलग से मीटिंग होगी। तो हम लोग चीजें फाइनलाइज कर रहे हैं। बैकएंड टीम में जो बैकएंड ग्रुप में ऑलरेडी है, दे नो वी आर फाइनलाइजिंग कि एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल वाला चीज, और दूसरा ग्राफ क्यूएल वर्सेस रेस्ट एपीआई। तो एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस, तो हम उसको फाइनल करके वी आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग द बैकएंड इंजीनियर्स, ठीक है। जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं इन बैकएंड, दे विल इवेंचुअली हेल्प अस टू बिल्ड द बैकएंड, ठीक है। तो उसमें हम लोग भी करेंगे जो जो बैकएंड में मतलब इंटरेस्टेड है, जो लोग ऑलरेडी वो ग्रुप ज्वाइन किए। बैकएंड लैब्स नाम से हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो पीपल आर देयर, वी एक्चुअली बिल्डिंग द बैकएंड पार्ट, और इवेंचुअली मतलब यू विल गेट द एपीआई कॉन्ट्रैक्ट्स। पर हम लोग तब तक अपना iOS की चीजें भी फाइनलाइज करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसकी भी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और ठीक है, तो अगेन थैंक्स एवरीवन, हाईली रिकमेंड खुद से जाके कंबाइन थोड़ा देखना है। बहुत डिसेंट आर्टिकल वीडियोस अवेलेबल है। मैं खुद कुछ अच्छे आर्टिकल वीडियो शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, प्लीज एक बार गो थ्रू करके आओ, तो ज्यादा सेंस बनेगा। फिर उस पर प्रॉपर बात करेंगे, तो आप लोग और हम लोग सब मिलके कंट्रीब्यूट, एक ओपन डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन होगा, ठीक है। तो मेक्स मोर सेंस। कूल, सो थैंक्स एवरीवन एंड गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू, बाय।